Okay, so if you remember that binding energy, now mass of a nucleus, function of atomic number and mass number, can be written as ZMP plus A minus Z times mass of a neutron minus binding energy, and binding energy was how much? So it is basically 1 by c square, and inside bracket you will have term, right? So AVA minus AS a की power 2 by 3, then you will have Coulomb term AC Z square divided by a की power 1 by 3, then you will have asymmetric term a minus 2Z square divided by a, then you will have pairing term, that is basically delta. So pairing term can be 0 for odd mass number, and it will have some contribution for even mass number. Okay, so now see, So video is not clear. video is not clear. It is fine. Clear as sir. Clear as sir. Okay, so this is your mass of a nucleus, a function of atomic number and mass number, Z times mass of a neutron plus A minus Z times mass of a neutron minus minus 1 by c square. This is binding energy that we have derived, right? So now we see A is the volume coefficient, all coefficients, energy of unit of energy. Now if you bring that c square here, so basically energy by c square, it will be that basically this coefficient, that unit of this coefficient will be converted into atomic mass unit or kg, because you see mass of a proton is like kg or atomic mass unit. Similarly, mass of a neutron. So if you bring that c square in all that coefficient, basically its unit will be converted. So it will absorb this c square and it will convert it in its unit into atomic mass unit. Okay. So this is known as semi-empirical mass formula. So what you can write? So I will not write c square, because c square at the end what it will do? It will convert that energy unit of this all coefficient into atomic mass unit or kg. Okay. So mza, how much it will be? So now we'll take that coefficient of mass numbers. So if you take coefficient of mass number, so first you will get mn, right? Then you will get av, then you will get as divided by a की power 1 by 3, right? Then you will get this coefficient. Is it clear? So this coefficient, you see, it will be absorbed by all this coefficient. So coefficient of mass number will be how much? Mn. Then you will have av. Then you will take as, so it will be divided by a की power 1 by 3, and this will from here you will get mass number from asymmetric term. So it will be exactly like this. Then you will have second term. Now let us take z common. So z, here you will have z, here you will have z. So what you will get? mp minus mn, right? Then you will have here you will have, right? No, here you will have z, right? That is Yes, v sir. for a of a, right? Then you will Yes, sir. have z square. Z square, where you will have, here you have z square, right? It's not Minus it. AC. Yes, sir. So minus AC divided by a की power 1 by 3. Then you will have minus, right? 4 a of a divided by a, right? Is it clear? Yes, sir. Yes sir. Okay. So then you'll have सी सर आपने क्या बोला? हाँ, सी सर हम क्यों नहीं लिए? सी जस्ट क्या कर रहे हैं, जैसे आपका E इक्वल्स टू MC स्क्वायर है ना? यस सर. हाँ, सो ये आपका समझ मान लो एनर्जी का यूनिट है.
तो सी स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो फिर ये बेसिकली क्या हो जाएगा, यूनिट कन्वर्ट हो जाएगा, एटॉमिक मास यूनिट, या फिर जस्ट इसका यूनिट कन्वर्ट हो जाएगा ना, एटॉमिक मास यूनिट और केजी. इफ इट इज एन एमईवी देन इट विल बी बेसिकली it will give you atomic mass unit. If it is in joule, divide by c square, it will give you kg, right? Yes. So this is your Sir, how is it 4A? 4a from here it will come. You see, if you a square minus 4za plus 4z square, right? So plus 4z square, from here you will get 4z square, sorry, 4 into a, right? Z square coefficient will be how much? 4a, Okay, right? sir. Okay, is it clear? यस सर. एंड सर Yes. सर वो z के कोफिशिएंट में लास्ट तक हाँ, माइनस plus हो रहा है होगा. ना. ये प्लस होगा ना, नहीं ये नहीं, उधर z का. z का हाँ ये वो वाला लास्ट वाला प्लस होना चाहिए ना. नहीं, प्लस नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पे आपका देखो कौन ओ सा माइनस तो बाहर है, सॉरी सर, ये सही है. वो प्लस नीचे ही है, प्लस. ठीक है, कोई डाउट? ठीक है ना? यस सर. Okay. So this is your now let us assume this is this term is small a. This is x and this is y. सर नीचे वाला प्लस होना चाहिए ना, ac by to the power 1/3. वो दोनों दो माइनस है. Exactly, दोनों प्लस होगा जाएगा ना? नहीं, हाँ सर. दोनों प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे Yes, sir. आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ना 4z ये सर वो माइनस है, बाहर एक माइनस से प्लस हो जाएगा. प्लस हो जाएगा ना. ये तो सर. एक ही जगह कुछ और कंसीडर कर लें, क्योंकि ये इसमें भी है. नहीं, ये आपका देखो, ये तो आपका कोफिशिएंट है ए सी ए ए, राइट, बट अगर स्मॉल ए कुछ भी कर सकते हो, तो क्या कंसीडर करना चाहते हो बताओ? अल्फा बीटा गामा ले लो. अल्फा बीटा गामा ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. लेट अस टेक दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज गामा. यू कैन टेक लाइक दिस आल्सो. हाँ सर. हाँ, सर शायद आपका आवाज ना माइक्रोफोन से नहीं आ रहा है. आवाज नहीं आ रहा है? अब आ रहा है सर, अब आ रहा है. Okay, okay. So this is all about your that mass, right? So mza will be how much? So it will be alpha a plus beta z plus gamma z square, right? It's not it? यस सर. Okay. So then you'll have another that is delta, right? Minus delta. Okay. So now we'll go to that mass parabola. Okay. Shall I erase? यस सर. Yes, sir. अच्छा, यहाँ पे देखो, नेट वालों के लिए मैं स्पेशली बोलना चाह रहा हूँ, जैसे आपका कोई नोट्स में या आपका कोई बुकलेट्स में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू दिया होगा, बाइंडिंग एनर्जी में फॉर दिस रिएक्शन हाउ मच एनर्जी विल बी रिलीज. सर साउंड नहीं आ रहा. हाँ, नहीं आ सर रहा? आपको माइक करेक्ट नहीं है शायद. सर सही से कनेक्ट नहीं है आपका mic. अच्छा, नहीं आ रहा है, कनेक्ट तो है, अभी आ रही है. अभी आ रहा है, वो माइक हाँ, थोड़ा सर. थोड़ा पास ले. हाँ बस. अब आ रहा है. हाँ सर, हाँ सर. ओके ओके. हाँ, मैं क्या कहना चाह रहा था कि आपका शायद बुकलेट या नोट्स में कुछ क्वेश्चंस आपका जो जहाँ पे डिस्कशन होना चाहिए उससे पहले डिस्कशन किया गया है ना, बट मैं इतना कॉम्पैक्ट वे में आपका पढ़ा रहा हूँ, जहाँ पे जो चीज़ नेसेसरी है, स्पेशली नेट वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ, वहीं पे मैं उस चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाऊंगा. तो 20 क्लास के बाद आप देखना आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है? क्योंकि जहाँ पे जो चीज़, जैसे मैंने एंगुलर मोमेंटम आपका या मैग्नेटिक मोमेंट क्वाड्रोपोल मैंने डिस्कस किया, वहाँ पे मैंने जस्ट बेसिक डिस्कशन करके छोड़ दिया, क्योंकि मेरे को आना है सेल मॉडल में, तब मेरे को डिटेल्स में पढ़ाना है. तो 20 क्लास के बाद आप देखना कि आपका एक क्वेश्चन छूट रहा है कि नहीं छूटेंगे, है ना. तो जहाँ पे जो चीज़ इंट्रोड्यूस करना है वहीं पे मैं उसको इंट्रोड्यूस करूँगा. आपको टीचर के ऊपर बिलीव करना चाहिए, है ना. यस सर. Yes, sir. क्योंकि आपको बुकलेट में ऐसे मिला हुआ होगा या कहीं नोट्स में कि यहाँ इस रिएक्शन में कितना एनर्जी रिलीज हो गया है ना, या कुछ भी क्वेश्चन देता होगा, बट जहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है मैं वहीं पे वो चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाऊंगा. तो 20 क्लास के बाद आप देखना आपका एक भी क्वेश्चन छूट रहा है कि नहीं छूटेंगे, ठीक है.
और मैं कॉम्पैक्ट वे में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपको 9 सब्जेक्ट्स को लेके जाना है वहाँ पे, है ना। एंड आई बिलीव आपको न्यूक्लियर में कोई भी क्वेश्चन आए तो नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि आपका सक्सेस मतलब मेरा सक्सेस है ना। और टीचर का प्लान होता है कि किस वे में स्टूडेंट को कंफर्टेबल जोन में रखना चाहिए, है ना। तो जहाँ पे जो चीज़ चाहिए मैं वहीं पे आपको दूंगा। चलो, तो फिर आपका ये आ गया मास। आप मास पैराबोला में जाऊंगा। तो आपका बेसिकली मास कितना आ गया? मास फंक्शन ऑफ जेड ए, दैट इज अल्फा ए प्लस बीटा जेड प्लस गामा जेड स्क्वायर minus delta. Okay, now for odd a, delta will be how much? 0, right? Yes, sir. For odd a, delta will be 0 because there is no pairing. Okay, now we can write this mz further, and that will be how much? Alpha a beta z plus gamma z square, right? Now for isobaric family, for isobars, a is constant, right? Constant और fixed. जितना सारे आइसोबार्स मतलब सारे का क्या होता है? मास नंबर सेम होता है, नहीं? Yes, sir. For isobars, mass is constant, mass number is constant. So if mass number is constant, the mass equation mza, if a is constant, then this equation is a function of z, right? Because a is, you have taken that a is constant, right? Yes, sir. If mz a is constant, this is now this will be the equation of parabola, right? Yes, sir. So this equation will be the equation of parabola. Now if you draw a plot it along x-axis, let us consider z, along y-axis mza. So it will be parabolic equation will be how much like this, right? Okay, यहाँ पे क्या है आपका? a को क्या माना गया है? कांस्टेंट. Okay, here a is constant. Yes, sir. Okay, now see this point. यहाँ पे भी कोई न्यूक्लियस अप्लाई करेगा, है ना। और इस मतलब इस जो आपका पैराबोला है, यहाँ से बहुत सारे आपका क्या है? न्यूक्लियस लाई करेगा. सारे का क्या है? मास नंबर कांस्टेंट है. दैट जेड नंबर इज वेरिड, राइट? सो यहाँ पे जो न्यूक्लियस लाई करेगा उसका मास क्या है? मास क्या है? मिनिमम है ना? Yes, sir. Mass is minimum. So let us take that z corresponding to this mass is, let us assume that is za. ठीक है, z corresponds to that mass, minimum mass, that will be za. यहाँ पे जो न्यूक्लियस लाई करेगा वो सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल होगा, है ना। हर पॉइंट पे आपका कोई ना कोई न्यूक्लियस लाई करेगा, सारे का मास नंबर फिक्स्ड है। तो इस पॉइंट पे जो आपका न्यूक्लियस लाई करेगा उसका मास मिनिमम है। मास मिनिमम है तो इसका मतलब बाइंडिंग एनर्जी मैक्सिमम है। सो दैट न्यूक्लियस दैट इज लाई हियर, इट विल बी मोर स्टेबल कंपेयर टू इट्स नाइबर. सर मोर स्टेबल या मोस्ट स्टेबल? मोस्ट स्टेबल, यस, है ना। इट विल बी मोस्ट स्टेबल, राइट। तो अभी मैं एग्जांपल आऊंगा। तो जेड निकाल सकते हो इस इक्वेशन, है ना। ये जो आपका इक्वेशन है ना, ये वाला इक्वेशन है, यहाँ से जेड कितना हो जाएगा? minus beta by 2 gamma. Exactly. So since that mass is minimum here, so for minima condition, that condition will be del m by del z will be 0. Okay. Now if differentiate this equation, if you differentiate it, how much you'll get? Beta plus 2 gamma za will be equals to 0.
Okay, it means ZA will be how much? Minus beta by 2 gamma. Minus beta by 2 gamma, right? Now if you substitute that beta, how it will look like? I'll explain this curve after 5 minutes. Let us calculate that ZA. So now ZA will be how much? The beta you know, right? Yes, sir. Okay. So can you please tell me now? So it will be like for MP A, minus MN. then you will have no minus. I already observed, na? So it will be minus Yes, sir. AMN minus NP now, right? Then you will have in denominator you will have 2 times 4 AA by A plus AC A की power 1/3 है ना? जस्ट मैंने कुछ नहीं किया, माइनस बीटा, बीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया और गामा का, है ना? किसी का कोई डाउट है यहाँ पे? नहीं, राइट? डाउट है किसी का? No, कुछ sir. नहीं किया, हाँ, No, यहाँ पे sir. बीटा और गामा का ये एक्सप्रेशन को सब्स्टिट्यूट किया. अब ए से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो. सर कौन से एक्सप्रेशन से सब्स्टिट्यूट किया? जो आप आपने पहले लिखे हो ना, एम मास पैराबोला से. जो मास का एक्सप्रेशन अपने लिखे थे ना, एम जेड ए दैट वाज हाउ मच? अल्फा ए प्लस बीटा जेड प्लस गामा जेड स्क्वायर माइनस डेल्टा. अल्फा, हाँ, अल्फा बीटा गामा मैंने एज्यूम किया था ना कुछ. यस सर. अल्फा कितना था आपका? एम पी माइनस एम एन माइनस 4 ए, राइट? So that express from that expression I have substituted that value. ओके ओके सर. Now I'll multiply that a mass number and divide by this. Then how it will look like? So 4a plus mn minus mp into a divided by, it will be 8a divided by, no, there will be no divisions because a is there, so it will be cancelled. Then you will have 2ac into a की power 2/3. Is it clear? So Yes, sir. now if you divide by 4a here also, then how much you will get? So you will get on plus mn minus mp divided by 4a into a divided by 2 plus ac by 2 a into a की power 2/3. दिख रहा है? नहीं दिख रहा है. नीचे वाला एकदम नहीं दिखता. हाँ, ऊपर लिख देता हूँ. So it will be ZA will be on plus mn minus mp divided by 4a of a into a divided by 2 plus ac by 2 a की power 2/3. Okay. Now mZA will be how much? mZA will be how much? Sir, can you repeat the question? No, I'm asking. So now mZA will be how much? So for odd nuclei, whole that discussion is basically for odd nuclei, right? Or odd mass number nuclei. So this will be how much? So it will be alpha A, right? Then beta Z, right? Plus gamma Z square. So beta Z, now you have ZA. ZA was how much? Minus beta y 2 gamma, right? So Yes, sir. if you have beta will be how much from this expression?
minus 2 2 gamma gamma z. ZA. 2 gamma z, right? So it will be basically 2 gamma, and we will already have ZA. So it will be 2 gamma ZA square. किसी को कोई डाउट यहाँ पे? Because MZA, now in the mass expression you have to substitute in place of Z, you have to substitute ZA. Okay, and you have beta. Beta is related to gamma and Z. So beta will be now it will be how much? Simply minus 2 gamma ZA. So I have substituted minus 2 gamma ZA. Then you have beta Z, but it will be ZA, because now the mass number is for ZA nuclei, right? So it will be ZA. So it will be minus 2 gamma ZA square, and that next term will be gamma Z square. Is it clear? Yes, sir. So basically you will get for odd nuclei, odd mass number, alpha A minus gamma ZA square. Is it clear? Yes, sir. Now can you write MZ minus MZAA? How much it will be? How much it will be? So that expression you already know. Say it will be alpha A plus beta. Now it will be how much? Minus 2 gamma ZA. Right? No? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 2 gamma ZA. किसी का कोई डाउट है यहाँ पे स्टब में? नहीं? Sir, Yes. sir, please can you explain again? Yeah. Now you know that MZ we already have discussed, right? MZ was how much? Alpha A plus beta Z plus gamma Z square. Now you know beta in terms of ZA. So beta was how much? Basically you know that ZA was how much? Minus beta by 2 gamma, right? So beta, how much you can write? Beta in place of beta, you can write minus 2 gamma ZA. That's why I wrote 2 gamma ZA into Z, because Z is there, right? So in place of beta, just I have substituted minus 2 gamma ZA. Okay. Okay. Then Thank you, then third term will be how much? Gamma Z Z square. square. Then you already have that expression for MZA. This was your expression. So it will be minus alpha A plus gamma Z square. So this will be cancelled, right? So you'll get what you will get? Gamma, then you have Z square minus 2Z ZA plus Z square, ZA square. Okay, so it will be gamma into Z minus ZA square. Is it clear? So any mass for any nucleus whose atomic number is Z, mass number is A, can be written in terms of this mass number or that minimum mass. So that expression will be simply MZA, that will be simply MZA A plus gamma Z minus ZA square. Z square. Okay. So this is your expression. Okay. Now I'll give one example. Suppose you have. सर एक छोटा सा डाउट था. Yes. ये सारा कैलकुलेशन केवल ऑड मास नंबर के लिए, राइट? हाँ, एग्जैक्टली. सारे जो आपका इवन मास नंबर के लिए अभी जाऊंगा, ये सारे आपका ऑड मास नंबर के लिए है ना? Okay. हाँ, so any mass you can write in terms of that minimum mass, and you see this term is always positive, so there will be some more mass, right? For any mass you can write in terms of minimum mass. Now I'll give one example. Let us take same parabola m as a function of z. So suppose आपका यहाँ पे आपका कौन सा है? यहाँ पे
32 32 किसका होता है 32 then you have some 33 here then you have 34 here better I'll write इधर आपका M है इधर आपका Z है ठीक है अब 32 किसका होता है मास एटॉमिक नंबर हाँ जर्मेनियम राइट 31 गैलियम थर्टी टू किसका होता है आपका गैलियम का है ना और 30 होता है जिंक का है ना और 33 आपका आर्सेनिक का होता है 34 आपका सेलेनियम का होता है so I'm giving one example so in this whole parabola there are 5 nuclei are there and their mass number is fixed that is 73 so among all these 5 members which one is most stable germanium right Germanium. Yes, sir. germanium and they are relatively less stable as compared to germanium okay so then they will try they have a tendency to convert into germanium so how will they convert तो क्या है ये आपका सबसे ज्यादा स्टेबल है ये 5 आपका जो न्यूक्लिया है इनमें से जर्मेनियम सबसे ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसका मास मिनिमम है एंड मास मिनिमम है यू हैव मास को कब मिनिमम होगा ये आपका ZMP प्लस A माइनस Z MN माइनस बाइंडिंग एनर्जी है ना तो मास कब मिनिमम होगा जब बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगा है ना क्योंकि माइनस बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा कब होगा है ना बाइंडिंग एनर्जी जिसका ज्यादा होगा वो मोस्ट स्टेबल है ना तो मास मिनिमम इसका जर्मेनियम का है इसका मतलब ये सबसे ज्यादा स्टेबल है एंड दे आर रिलेटिवली लेस स्टेबल द गैलियम जिंक आर्सेनिक एंड सेलेनियम they are relatively less stable so they always have tendency to convert into germanium कैसे convert हो जाएगा So How decay will- के through. Hmm? Decay के through. exactly so what type of decay that will be बीटा डिके सो बीटा डिके 2 तरह की होता है इधर आपका जेड क्या है कम है तो आपको जेड को बढ़ाना पड़ेगा है ना 30 ऑन 32 तो यहाँ जिंक है जिंक से आपको गैलियम में आना पड़ेगा तो एटॉमिक नंबर बढ़ाना पड़ेगा फिर गैलियम से जर्मेनियम है ना एक एटॉमिक नंबर और बढ़ाना पड़ेगा तो कौन सा बीटा डिके के थ्रू पॉसिबल है ये लेफ्ट में Beta minus decay. बीटा माइनस डिके एग्जैक्टली तो इसमें क्या होगा आपका लेफ्ट में जो है इसमें आपका क्या होगा बीटा माइनस डिके होगा तो एक बीटा माइनस डीके से क्या होगा जिंक से गैलियम में कन्वर्ट हो जाएगा फिर गैलियम से फर्दर बीटा माइनस डीके तो जर्मेनियम में कन्वर्ट होगा है ना तो इसका पैराबोला का जो लेफ्ट में है तो बीटा माइनस डीके होगा ठीक है क्योंकि आपको पता है बीटा माइनस डीके में बेसिकली क्या होता है सपोज यू हैव न्यूक्लियाई और न्यूक्लियस ZA so through beta minus decay that atomic number is basically increased by 1 okay so आपका कोई आपका सपोज मान लो ये न्यूक्लियस है XZ है so if there is beta minus decay so this is your product of that daughter nuclei it will the daughter nuclei will have Z plus 1 number atomic number Z plus 1 atomic number and that beta minus particle is you know that is E minus 1 0 and of course there is a neutron so इस साइड में जो है आपका इसमें क्या होगा बीटा माइनस डीके है ना तो बीटा माइनस डीके में देखो एक एटॉमिक नंबर क्या होता है बढ़ता है ना ये आपका पेरेंट है सॉरी यस पेरेंट है डॉटर का क्या हो गया एक बढ़ गया सिमिलरली इधर देखो इधर आपका एटॉमिक नंबर ज्यादा है आपको कम करना है 34 से 33 में आना पड़ेगा है ना फिर 33 से
32 पे, तो इधर क्या होगा बेसिकली, इधर आपका बीटा प्लस डीके होगा, क्योंकि बीटा प्लस डीके में क्या होता है बेसिकली, सपोज यू हैव सम parent, positron nucleus. exactly, so this is your parent nucleus. So after beta plus decay, its atomic number is decreased by 1, and you have that beta plus particle that is positron, E plus 1, 0, and you have neutron. So this side, that selenium will decay on beta plus particle and it will be converted to arsenic. Arsenic further decay on beta plus particle and it will be converted to germanium, because they are relatively less stable as compared to germanium. Similarly, this side, on the left hand side, they have low atomic number. So to increase that atomic number, zinc will decay on beta minus particle. It will be converted to gallium. Then gallium will be converted to germanium by another beta minus decay. Is it clear? Yes, sir. Okay. Now for even case. So this is your about your mass parabola for odd mass number. सबको समझ में आ रहा है क्लास में? Yes, किसी sir. का कोई Yes, डाउट? sir. हाँ, डाउट हो तो पूछ सकते हो, है ना? Sir, odd mass number means these rules are applied for only odd mass. Yeah, because for odd Okay, mass number, that right. So I've considered that delta is 0 for that, because there is Okay, no sir. pairing, right? Now we'll discuss about that even mass number, and same heading, mass parabola. Mass parabola for even A. A means mass number. तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा बेसिकली, MZA will be how much? So same thing, alpha A plus beta Z plus gamma Z square. यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा टर्म, माइनस डेल्टा किसके लिए, Sir, odd. माइनस डेल्टा ऑड ऑड है इवन इवन, देखो मास कम हो रहा है नहीं, अच्छा, yes, sir. Yes, sir. एग्जैक्टली Yes, मास जो जिसका मास कम है वो ज्यादा स्टेबल, इवन इवन किसके लिए, ओके ठीक है। और आपका इवन कब इवन मास नंबर कब पॉसिबल है, अगर आपका इवन इवन का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इवन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर इवन, तो ये पॉसिबिलिटी है। दूसरा इवन मास नंबर कब पॉसिबल है, दोनों ऑड ऑड हो जाए, तो उसके लिए मास मास कितना हो जाएगा, अल्फा ए प्लस बीटा जेड प्लस gamma z, and of course it will be plus. So this is for odd case. So here you can write proton and neutron, proton, neutron. Okay. So same thing. Now we see there will be now for isobars. Sir, Yes. sir, minus delta even के लिए और plus odd के लिए कैसा मतलब how you thought? Yes, because you see when I have written the term MZA, right? So you have ZME plus A minus ZMN, right? Then you have the term, right? AV term, AS term, then you have, for the last term was pairing term. So pairing term is positive for even MN case. So pairing term is positive, that pairing time I have denoted by delta. So it is positive for even MN case, you already have minus, right? Okay, Not it. sir. So that's why it is giving minus. So for odd case, it was minus. So minus plus. Okay, sir. Okay. Okay. So for isobars, okay, A is again fixed or constant. So, sir, odd nucleus are most unstable in this case. Odd nucleus is most unstable.
You can Uh, say odd nucleus is less stable as compared to even nucleus. but for I mean even odd or odd even, delta is 0, right? Exactly. Yes. So Exactly. If m, you remember, who are you? sir, What did you Pinaki, do? Huh? Pinaki. Pinaki. Okay. If you remember, Pinaki, in binding energy per nucleus, that during that discussion, I have written that number of stable nucleus in nature. So even, odd even, and odd. So odd केस में कितना था आपका? Only 4 था, है ना? तो they are actually less stable. इसलिए उसका जो number of compounds से 4 ही था, है ना? 4 ही है. Okay, Yes, so sir. you are correct. You Okay. are correct. Okay, so they are basically less stable. So isobars के लिए again क्या है? A fixed है, but A आपका क्या है? Even है ना? A even है, तो A even के लिए 2 पॉसिबिलिटी है, एक तो ये है, दूसरा ये है ना? तो इसके लिए जो पैराबोला आपको बनेगा, 2 पैराबोला बनेगा, एक तो इसके लिए बनेगा, एक तो इसके लिए बनेगा. तो इसका अगर पैराबोला आप ड्रॉ करोगे, so let us take along z axis again, sorry, x axis again that atomic number, and this side your mass number. So you'll have 2 parabola here for even case. ठीक है, तो कौन सा ऑड के लिए होगा, कौन सा इवन के लिए होगा? जो नीचे वाला even के लिए. even के लिए. This one will be for even, right? Yes. Yes. Yes, sir. And this one is for odd. ठीक है, ये जो सेपरेशन है कितना है बेसिकली? 2 delta. Exactly, so it will be 2 delta. Okay, so I'll come to this plots again. I'll discuss in detail, but let us calculate that mza. So that za will be how much? Again the same. Beta by 2. Again it will be same. Whatever compounds, whatever, if it is even or odd, again it will be same, because if you differentiate, so for za, del m by del z should be equals to 0. Now if you differentiate both equation, you will get same expression, and that will be beta plus 2 gamma za equals to 0. It means za will be how much? Za will be minus beta by 2 gamma. So it will be same. You see, for odd case also, whatever you got for odd, it is exactly same. So I am not deriving again, since we have derived. So it will be 1 plus mn, mass of neutron minus mass of a proton, divided by 4 asymmetric term, then mass number divided by 2 plus how much? Anyone help me? How much it was? AC by 2AA into A की power 2 by 3. क्या मैं सही लिखा? नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Very good. चलो. Now, what is the expression for MZA for even case? So MZA will be what will be the expression? So just you have to substitute here that value of beta, right? And Z will be ZA. So if you substitute it, MZA will be how much? So it will be alpha A minus gamma ZA square minus delta. सेम ऑर्डर की तरह है, जस्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एक टर्म डेल्टा आ जाएगा. तो ये जो है आपका इवन के लिए है ना. किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? किसी को कोई डाउट है? सर इसके पहले वाली जो एक्सप्रेशन लिखी थी फिर से लिखिएगा सर. कौन सा एक्सप्रेशन पुनीत? सर इवन के पहले आपने एक एक्सप्रेशन लिखा था ना. हाँ,
यस सर सर मैं नोट नहीं कर पाया था तो नेटवर्क ग्लिच हो गया था। अच्छा अच्छा अच्छा, कौन सा एक्सप्रेशन बताओ? Z is equal to 1 plus n minus x by 4a into a upon 2 plus जेडे c का upon वैल्यू, जेड का वैल्यू? पुनीत आप ये बोल रहे हो जेड अभी तो ये वाला? यस सर यस सर यस सर हाँ, जेड विल बी हाउ मच? माइनस बीटा बाई 2 गामा, and it will be, if you know that expression for beta, right? So it will be, it's exactly same, right Puneet? यस सर यस whatever you जी have. सर हाँ हट गया था ना इसी वजह से नोट नहीं कर पाया था। हो हाँ जाएगा सर कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ, मैं फर्दर लिख के दे रहा हूँ, एम एन माइनस एम पी बाई 4 ए ऑफ ए इंटू ए डिवाइड बाई 2 प्लस ए सी बाई 2 ए की पावर 2 बाई 3। सर वो बीटा में एक एसी टर्म भी था ना? हम्म, वो बीटा में एक एसी वाला टर्म भी था ना? बीटा में एसी? बीटा में कौन सा एसी वाला था? एक मिनट, नहीं बीटा में एसी नहीं है। एसी कैसे रहेगा बीटा में, क्योंकि एसी का सिर्फ जेड स्क्वायर वाला था ना? नहीं, क्योंकि आपका एसी का एक्सप्रेशन क्या था? माइनस, सॉरी, जो कूलम वाला टर्म का कोफिशिएंट क्या था? माइनस ए सी जेड स्क्वायर डिवाइड बाई ए की पावर 1/3। हाँ, आपको मिलेगा अगर आप, क्योंकि मैं, Actual हाँ, expression है। यस 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 यस, you will get it if you consider that AC term is z into z minus 1/a। वो अगर Yes, sir. कंसीडर करोगे आपको मिलेगा, बट मैं AC जेड स्क्वायर को लेके कैलकुलेट कर रहा हूँ। बोथ आर करेक्ट। सर हाँ एम जेड ए में बीटा का टर्म कहाँ गया सर? हाँ एम जेड ए जो इवन हाँ, में बीटा का यहाँ पे बीटा का टर्म। हाँ, वही तो बोल रहा हूँ ना, वो समझ में नहीं है आपको। जैसे आपका जेड कितना था आपका? माइनस बीटा बाई 2 गामा, यस सर। है ना? तो बीटा यस कितना सर, हो जाएगा बेसिकली? माइनस 2 गामा जेड गामा ए। जेड, यस वही सर। सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पे, वही सब्स्टिट्यूट किया तो 2 गामा जेड है। आप जेड का एक्सप्रेशन लिख रहा हो ना, तो जेड की ओके जगह सर, पे जेड ओके हो सर, जाएगा। एग्जैक्टली ओके विल सर। गेट, ठीक है? Okay, so this is your for even case. Now for odd case, it will be mza. It will be alpha a minus gamma z a square plus delta. So this is for odd case. Okay. Now mz will be how much? For even case के लिए mza कितना हो जाएगा? Sorry. सर पहला वाला ही होगा, सिर्फ एक डेल्टा टर्म है? Exactly. So it will be how much? It will be alpha a, then 2 gamma z z a, right? 2 gamma z z a, then gamma z square प्लस माइनस डेल्टा। ठीक है ना? बीटा की जगह पे क्या लिखा मैंने? माइनस 2 गामा z। तो प्लस, प्लस का मतलब क्या है आपका? ऑर्डर केस है, और माइनस का मतलब क्या है? इवन केस। मतलब यहाँ पे जो प्लस माइनस मैंने लिखा, ये आपका इवन केस। ठीक है? Okay. Now I'll give one example, then we'll go for problem. So mass parabola I'll draw for on nucleus or a family of isobars. This side you have Z. Let us take more. ठीक है. So
34 35 36 33 ठीक, 34 किसका है? So let us take that mass number is 76. Selenium. Selenium, good. Then 35 bromine, right? Then you have krypton. 33 is arsenic, right? 32 is जर्मेनियम। ठीक है, तो देखो ये आपका सेलेनियम जो है मोस्ट स्टेबल है, बाकी क्या है? तो ये वाला बेसिकली किसके लिए है? आपका ऑड ऑड के लिए। ये आपका क्या है? इवन इवन के लिए है ना। तो 34 मतलब क्या है? इसका एटॉमिक नंबर इवन है और proton number of proton is even, number of neutron is even. Basically that nuclei that is lie on the lower parabola, proton numbers and neutron numbers are even, और जो अपर पैराबोला में है उसका प्रोटॉन्स नंबर एंड न्यूट्रॉन्स नंबर आर ऑड। तो सेलेनियम क्या है? इसमें मोस्ट स्टेबल है, दे आर रिलेटिवली लेस स्टेबल, सो दे हैव ऑलवेज टेंडेंसी टू कम टू और कन्वर्ट इनटू सेलेनियम। कैसे कन्वर्ट हो जाएगा? अगेन बीटा प्लस डीके होगा। अब यहाँ से बीटा प्लस डीके हो जाएगा तो बेसिकली क्या हो जाएगा? बीटा प्लस डीके में एक प्रोटॉन क्या हो जाता है? एक कम हो जाएगा। कम हो जाएगा, है ना। एक प्रोटॉन कम हो जाएगा तो इसका 35 प्रोटॉन नंबर हो जाएगा, है ना। Yes, sir. 35 प्रोटॉन नंबर हो जाएगा तो इसका जो ये है आपका न्यूट्रॉन नंबर है वो भी आपका क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से बीटा प्लस डीके होने के बाद क्या हो जाएगा? बेसिकली ऑड ऑड पैराबोला में चला जाएगा, नहीं। Yes, sir. क्योंकि बीटा प्लस डीके से क्या हो जाएगा? इसका मास एटॉमिक नंबर कितना? 35, 76 माइनस 35 करोगे वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, तो वो भी ऑड हो जाएगा, है ना। तो एक बीटा प्लस डीके से लोअर पैराबोला से अपर पैराबोला में आ गया। फिर ब्रोमीन से क्या हो जाएगा? आपका एक बीटा प्लस डीके होने के बाद सेलेनियम में आ जाएगा, है ना। तो आपका ये फर्दर बीटा प्लस डीके, ठीक है। सिमिलरली जर्मेनियम से जब एक बीटा प्लस डीके होगा, सॉरी बीटा माइनस डीके होगा यहाँ पे, क्योंकि बीटा माइनस डीके में क्या होता है? एक बेसिकली प्रोटॉन इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो जर्मेनियम से बीटा माइनस डीके होने के बाद इट विल बी कन्वर्टेड टू आर्सेनिक, देन further there will be further beta minus decay and then arsenic will be converted to selenium, okay, ठीक है। इतना समझ में आई? Yes, sir. लोअर पैराबोला इवन इवन कैसे, एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए फिर से। Okay, if you remember that formula mza, right? So you have some terms into minus delta was there, right? So minus delta basically there is a subtraction, right? तो इसलिए ये आपका इवन इवन के लिए था ना, और ऑड ऑड के लिए क्या था? आपका प्लस डेल्टा था। तो दिस विल बी लो, दैट मास विल बी लेस, राइट, एज कंपेयर टू दिस। ये आपका क्या है? इवन इवन केस के लिए। ये आपका क्या है? ऑड ऑड केस के लिए, नहीं। तो मास यहाँ पे कुछ टर्म है, फिर माइनस है, तो माइनस मतलब क्या है? ये मास क्या है? लेस है। तो यहाँ पे आपका ऑड ऑड केस के लिए कुछ नंबर प्लस डेल्टा, तो ये दिस मास विल बी हाई एज कंपेयर टू दिस। तो इसलिए जो लोअर पैराबोला आपका बन रहा है वो आपका इवन इवन के लिए बनेगा, है ना, नहीं। ओके सर। हाँ, समझ में आई नहीं? फिर लोअर में तो मास हमेशा ही कम रहेगा। नहीं, मास हमेशा देखो, एक्चुअली कोई भी पर्टिकुलर एक पॉइंट चूज करो, कोई भी पर्टिकुलर एक एटॉमिक नंबर चूज करो, तो इस पर्टिकुलर एटॉमिक नंबर के लिए ऑफ कोर्स दैट मास विल बी लेस। अब यहाँ पे आ जाओ, सपोज मान लो आप एक एक केस ले रहे हो, है ना। यहाँ पे क्या है? आपका इवन इवन केस है। अब यहाँ पे आ रहे हो तो यहाँ पे आपका क्या है? मास कम है, ज्यादा है ना। तो मास बेसिकली यस, मास इज लेस, बट यू सी they are not stable, they will always convert it into that selenium by the process of beta decay, है ना।
That's why they are not relatively less stable. They will convert whatever mass. Yes, even के लिए आपका mass कम है, but they will convert it into selenium. Ultimately, it will convert into selenium by the process of beta plus decay. Is it clear? सर आई थिंक मास कम ही होगा ब्रोमीन का, क्योंकि Sorry? मास शायद ब्रोमीन का कम ही होगा केआर से, अदरवाइज तो ट्रांजिशन नहीं हो पाएगा ना बीटा प्लस. Exactly. Is it clear? Now suppose मान लो ये सिचुएशन है. सपोज मान लो एक सिचुएशन और बता रहा हूँ मैं आपको. Ultimately, they are coming to selenium by the process of beta plus or beta minus decay. Okay, so their goal is to come to the towards that lower point of that parabola. अब सपोज मान लो यही केस आपका है, ये चीज आप लोग बताना. सपोज मान लो कोई ए एटॉमिक सॉरी मास नंबर इज फिक्स. यहाँ पे आपका कॉपर है. कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 29, राइट? कॉपर का कितना होता है? 29, राइट? लेट अस टेक अनदर जिंक 30. Let us take another nickel here 28, right? यहाँ पे कॉपर है, यहाँ पे आपका क्या है? जिंक है, यहाँ पे आपका क्या है? निकल. आप बताओ कौन सा मोस्ट स्टेबल है? निकल और जिंक ऑलरेडी स्टेबल है. See, although that this copper is lying at the minimum point, but it is even odd case, right? नहीं? Yes sir. Odd case, it is binding energy or mass is higher as compared to जिंक और निकल. सो बेसिकली ये आपका क्या है? लोअर पॉइंट पे लाइक कर रहे हैं, तब भी क्या है? इसका मास ज्यादा है, और यू कैन से द बाइंडिंग एनर्जी फॉर कॉपर इज लेस एज कंपेयर टू निकल एंड जिंक, बिकॉज दे आर लाइंग बेसिकली ऑन दैट लोअर पैराबोला, राइट? तो कॉपर क्या हो जाएगा बेसिकली? निकल या जिंक पे कन्वर्ट हो जाएंगे, और यू कैन से जिंक एंड निकल आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू कॉपर. कैसे कन्वर्ट हो जाएंगे? कॉपर निकल में कैसे कन्वर्ट होंगे? basically by the एक कम बना बीटा माइनस डी. beta plus decay, right? And this is by beta minus. So although it is lying on the lower point of the parabola, but it is in ordered parabola, right? And that nickel and zinc lie on the lower parabola. So copper is less stable, so it will convert into nickel or zinc by the process of beta decay. Okay, now let us solve the problem. Then we'll go to the next topic, that is Fermi gas model. Okay, please write. 1 minute. Huh? 1 minute. ठीक है. The binding energy of a nucleus is approximated by formula B equals to A1A minus A2 A की power 2/3 minus A3 Z squared A की power -1/3, then A4 A minus 2Z whole square divided by A. So that is the binding energy expression they have given, where Z is the atomic number, A is the mass number. Okay, if A4 by A3, that coefficient ratio is how much? 30. Okay, full stop. The atomic number Z for naturally stable isobar. The atomic number Z for naturally stable isobar, आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आप बताओ कौन सा होगा. फर्स्ट ऑप्शन इज 30A divided by 60 plus
a की पावर 2/3. सेकेंड ऑप्शन है 30 प्लस डिवाइड बाय 30 प्लस a की पावर 2/3. सी ऑप्शन इज 60 a divided by 120 a की पावर 2/3, and D is none of this. None of these. कौन सा होगा? Excuse me, sir. Yes. Can you please repeat the question? Yes. The binding energy of a nucleus is approximated by formula B equals to A1A minus A2 a की power 2/3 minus A3 Z square a की power minus 1/3 minus A4 a minus 2Z whole square by A, where Z is the atomic number, A is the mass number. If A4 by A3 is 30, the atomic number Z for naturally stable nuclear, naturally stable isomer. So you have to check. Sahil, do? Yes, sir. So we will calculate Z. Yes, naturally stable मतलब क्या है? Maximum binding energy, right? Yes, sir. So B is given A1A minus A2 a की power 2/3, then A3 Z square a की power minus 1/3 minus A4 a minus 2Z whole square divided by A. So for stable, naturally stable isomer, del B by del Z equals to 0. So if you do this, you will get this term will not depend on Z. So this will be give you 2A3 Z, right? A की power minus 1/3. Then this will give you, last term will give you how much? 4 A4 A minus 2Z divided by A minus 2Z by, okay? Yes, sir. Then how much you'll get? So if you solve it, you'll get Z equals to 4 A4 divided by 8 A4 by A plus 2 A3 divided by A की power 1/3. Okay. So if you multiply here by mass number, Sir, yes. it will be 2A4. No? Sir, C option है. Yes. 2A4 where? Last No. term. No. You see A minus 2Z here. If you differentiate, 2 will come, right? Yes, sir. Further, you have to differentiate this A minus 2Z. Okay. Sorry. Now, if you multiply and divide by A, this term will give you 4 A4 A4A divided by 8 A4 plus how much? 2 A3 A की power 2/3. Okay. Now, if you divide by 4A4, that will give you A divided by 2 plus A3 by 2A4 A की power 2/3. So A4 by A3 was how much? 30, right? So it will Yes, be 1 sir. by 30. And if you solve it, 60A by 120. exactly 60, sorry. So it Plus will it be, to the power 2. so it will be, Z will be how much? 60 A divided by 120 plus A की power 2/3, right? Yes, sir. Okay. 2 more problems are there. Tomorrow I'll do that problem. Okay, then I'll go to that Fermi gas model. Is it clear? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. Okay, then I'm leaving here. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.